Okay, students, let's continue for the chapter refraction of light. So अभी तक हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में काफी कुछ समझ चुके हैं। रिफ्रैक्शन क्या है, किस तरह से रिफ्रैक्शन होती है, हाउ रिफ्रैक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्शन, उसके कुछ बेसिक टर्म्स, मीडियम्स के कनेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो दो बेसिक लॉज हैं जिसको हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं वो भी हम लोगों ने समझ लिया है। फिर हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कल डिस्कस किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कैलकुलेशन को हम लोगों ने समझा। अब फिर हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन से होने वाले कुछ बेसिक से फेनोमेना। जैसे कि कल हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, तो जिसमें हम लोगों को एक टर्म पता चला लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट के बारे में। फिर आगे हम लोगों को कुछ और चीजें समझनी है व्हेन वी कम फॉर द रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन जब होता है तो रिफ्रैक्शन करवाने के लिए हम लोगों को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग तरह के मीडियम को यूज करते हैं। ओवर हियर वी आर यूजिंग द प्रिज्म। तो कल हम प्रिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि प्रिज्म क्या होता है, कैसे प्रिज्म से लाइट रे पास होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। किस तरह से इंसिडेंट रे क्रॉस होकर इमर्जेंट रे में निकल कर आती है और फाइनली वो डेविएटेड एंगल का फॉर्मेशन होता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग इसके बारे में ही थोड़ा सा और समझेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर द टर्म डिस्पर्शन एंड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। सो व्हाट इज डिस्पर्शन एंड व्हाट इज स्पेक्ट्रम? When the white light ray is allowed to pass through a glass prism in a certain angle, then we do use to observe that the light ray used to split down into its seven color components. And this breaking down of light ray is called to be as the dispersion of light. Now, see, students, when we talk about our light which we do use to see, जो light हम लोग देखते हैं, that is पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है? जो विजिबल लाइट है, जो हम लोगों की विजिबल रेंज ऑफ लाइट है, ये हम लोगों की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की है, विच इज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। तो रफली ये इतने के बीच में है, which contains several color components, different color waves से ये निकल के आती है, that is red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet। तो ये सब मिलकर हम लोगों का बनता है विजिबल लाइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज विजिबल लाइट। ये हम लोगों के लिए विजिबल लाइट हो जाती है, which is called to be as polychromatic light। जब हम लोग इस व्हाइट लाइट रे को किसी एक प्रिज्म से एक सर्टेन एंगल से क्रॉस करते हैं, तो हम लोगों को ये ऑब्जर्व होता है कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट it used to break down or it used to split down into its seven color components, and this breaking down of colored lights into its seven color component is called to be as dispersion of light। ये जो breaking down है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं dispersion of light। The next thing which we have to understand over here, that when this seven light used to come out, जब ये सातों रंग निकल कर आते हैं, then this band of seven color used to call to be as the spectrum of light। So these two terms are very important and very easy to remember। सिंपल तरीके से याद रखो, जब भी एक ग्लास प्रिज्म से व्हाइट लाइट रे को एक सर्टेन एंगल पर पास करवाया जाए, तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है अपने सेवन कलर कंपोनेंट्स में। ये ब्रेकिंग डाउन, ये जो लाइट की जो इसकी अपने सेवन कलर्स के कंपोजिशन में जो ब्रेकिंग डाउन होती है, दिस इज कॉल्ड टू बी एज द डिस्पर्सन ऑफ लाइट रे। Whereas the breaking down, or sorry, the band of the seven colors is called to be as the spectrum over here। तो ये चीज हम लोगों को समझना है। So whenever we do used to experience that the light ray used to pass not only from prism but for any kind of glass body where the light ray can be able to split out into its seven colors, there we can observe dispersion of light। A very common example of the dispersion of light and the spectrum which we do use to experience, that is the formation of rainbow। So that we will understand in our higher classes, that how the rainbow used to form and what are the phenomena for the formation of the rainbow। So let's see some of the application of refraction of light। So when we do used to see for the refraction of light, we had seen so many different things,
सच एज फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब लाइट रे ग्लास प्रिज्म से क्रॉस होता है तो वो अपने 7 कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो रिफ्रैक्शन के कई सारे दूसरे दूसरे फेनोमिना या दूसरे दूसरे कैरेक्टर्स भी हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। सो सच एज फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू यूज टू सी फॉर अ मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन एक बहुत कॉमन सा फॉर्मेशन है जो कि हम लोग देख सकते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से मिराज का कंडीशन कैसे बनता है? सो वन ऑफ द वेरी कॉमन पर्सनल एक्सपीरियंस व्हिच यू कैन बी आल्सो सी, तुम एक कॉमन एक्सपीरियंस है, तुमको ये पता चल सकता है while if you will be traveling through a road, अगर तुम लोग कभी एक पिच रोड में ट्रैवल कर रहे हो इन अ सनी डे बाय अ कार और बस, तो अगर तुम लोगों ने ऐसा कभी देखा होगा कि रोड पे काफी दूर किसी एरिया में लग रहा है कि रोड जो है वो भीगा हुआ है, इट इज वेट ओवर देयर। नाउ हाउ वाटर इज प्रेजेंट ओवर देयर, वहां पे पानी आया कहाँ से? सो व्हेन यू रीच ओवर देयर यू फाइंड दैट नो देर इज नो वाटर, वहां पे पानी है ही नहीं। सो व्हाई दिस इज? बिकॉज इट हैज बीन अपेयर्ड टू बी एज वाटर, वो वहां पर अपेयर हुआ है वाटर के रूप में। दैट इज अ कंडीशन ऑफ मिराज, ये एक मिराज का सिचुएशन है। असल में होता क्या है कि से एज फॉर एग्जांपल दिस इज द रोड, ओके, दिस इज द रोड एंड यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर, ओके। सो ड्यू टू द सन, सन की गर्मी के कारण जो हीट आती है दैट यूज टू हीट अप द रोड, ये रोड को हीट कर देती है। सो एज द रोड गेट्स हीट अप द एयर अबव द रोड ऑल्सो गेट हॉट ओवर देयर। सो जैसे ही ये रोड गर्म होगा तो इसके ऊपर के जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी। जैसे ही वो हवा गर्म होगा व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व, दिस एयर इज गोइंग टू मूव अप, ये हवा जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी बिकॉज वी नो दिस थिंग दैट दैट हॉट एयर यूज्ड टू बी लाइटर एंड बिकॉज ऑफ दैट इट यूज्ड टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। So because of this movement, what actually going to cause? It is going to cause a refraction of light. So what is going to happen or how the refraction is going to happen? See, you are looking the this portion from a particular distance. एक particular distance से तुम इसको देख रहे हो. So when you are looking this one, then you will find that the light ray is going to come through this denser air to less denser air, and through this difference of the density of the air, it will seems to be a drizzling condition। ये यहाँ पर एक थोड़ा सा एक हम लोगों को धुंधला धुंधला सा एक shiny appearance होगी, and that shiny appearance made by our brain to understand as a water source, because this is our human development। हम लोगों की जैसे जैसे जेनेटिक डेवलपमेंट हुई है, जैसे जैसे हम लोग ग्रोथ किए हैं, हम लोगों के ब्रेन में सबकॉन्शियस में ये एक चीज बैठी हुई है कि इफ वी डू ऑब्जर्व समथिंग समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग मींस सच एज फॉर एग्जांपल अ शाइनी ऑब्जेक्ट, अ शाइनी अपीयरेंस वहां पर हम लोगों को दिख रही है, एक शाइनी कंडीशन हम लोगों को वहां पे दिख रही है, और वो थोड़ी सी ब्राइट है, वो बेंड कर रही है, वो वहां पर फ्लो कर रही है। सो इट मेक्स आवर ब्रेन टू आइडेंटिफाई और इट मेक्स आवर ब्रेन टू रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर प्लेस as the source of water or there is some kind of water body। बट वेन यू एक्चुअली रीच ओवर देयर, जब तुम वहां पे पहुंचोगे यू विल फाइंड नथिंग इज देयर, वहां पे तो पानी है ही नहीं। Why it is so? It is because it was a appearance to you। ये basically तुम लोगों के लिए एक appearance था, it was not an actual situation which was present over there। वहां पे कोई actual situation था ही नहीं। So this is the thing which we do use to experience for the mirage condition। तो मिराज के लिए ये होती है। So again, mirage is a formation of the refraction of light। One of the very common example which you can do or which you can practice at your home also, take a glass of water, fill the glass of water, not completely, you just fill it half or a little bit more than a half, and then you just place a pencil or a pen like this and you place it on a tabletop or on a flat surface, and from a far point you just observe it, you will see that the pencil will seem to be broken over here। तुमको ये लगेगा कि ये पेंसिल जो है ये यहाँ पे टूटा हुआ है। Now why it is broken over there? It is not broken because when you will take this pencil out you will observe that the whole pencil is a single piece। So how you will identify that that pencil is broken over there? वो वहां पे broken कैसे है? So this is not possible over there। So then
then you can recognize it out due to the refraction of light. What happens? This portion over here, the light ray is coming out from the water over here. And this portion of the pencil is coming out just through the air and glass. So here, the light ray has to suffer refraction from water as well as glass. But over here, only the light ray has to suffer the refraction from air to glass. And because of this, what happens? There is a dazzling condition, or there is a condition where we do use to just think that the light ray is coming from two different positions. And because of this identification of our brain, or because of our eye and our brain used to collaborate it in such a manner that it makes us identify that this pencil is broken. So this is a very good example which you can see for the refraction of light. तो ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस तुमको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास पैनल लेना है या ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, उसमें पानी लेना है और फिर एक पेन या पेंसिल से तुम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. सो बस ये लाइट रे की दो अलग अलग कंडीशन से रिफ्रैक्शन होने की वजह से लाइट रे में बेंडिंग हम लोग को देखने को मिलती है. And there are so many other things which we do use to experience because of the refraction of light, such as the early sunrise and late sunset. सबको पता है सनराइज कैसे होती है, सनसेट कैसे होता है या कब होता है. लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि हम लोग जब सनराइज को ऑब्जर्व करते हैं, सो वी कैन ऑब्जर्व द सनराइज अप्रोक्सीमेटली 2 minutes बिफोर देन इट्स एक्चुअल कंडीशन. And we can observe the sun also for extra 2 minutes after even it got set out. तो इसका मतलब ये हुआ कि सनराइज से पहले तुमको 2 मिनट पहले ही सन दिख जाएगा और सनसेट हो जाने के बाद भी तुमको करीब करीब 2 मिनट तक सन दिख सकती है. सो व्हाई दिस हैपेंस? दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो ओवर हियर you can see that this is the position where we do use to observe that the sun is going to rise, because we live on the surface of the earth. Now, sun is over here. The sunlight which is entering through our atmosphere, it causes a refraction in such a manner that it creates a virtual image of the sun ahead of its actual position. देखो sun की यही actual position है, लेकिन इस actual position से ऊपर हमको sun दिखने लगता है. So this is not forever, but it just go for approximately 2 minutes time. ये करीब करीब 2 मिनट के समय के लिए होता है. And as the sun used to rise up, you may also observe that two sun can be seen. बहुत समय ऐसा होता है कि आसमान में तुमको दो सन एक साथ दिख जाती है during the sunrise. If you will see through a clean sky, a clear sky at the very early morning, you may able to find this one. This is not possible that at every condition or at every morning you will be able to find, but this is a real situation where you can observe that the virtual image is getting merged with the actual sun. तो ये होता है, ये तुम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो. आई होप दैट I will provide you an animated video of this one also. I will try to do that one. सो यहाँ पर ये दिखेगा तुमको, पहले ये अपेयरिंग सन दिख जाएगी, फिर जैसे जैसे अर्थ का रोटेशन होगा यू विल ऑब्जर्व दैट दिस इमेज इज गेटिंग मर्ज विद द एक्चुअल सन, and then finally you will be able to see only one sun. So this is a condition which we do use to experience because of refraction of light. And not only this, but refraction of light can be also observed in the sky in the case of stars also. We do used to study that twinkle twinkle little star, but actually stars doesn't twinkle. They doesn't twinkle. So why do we say it as, or why do we see that the stars are twinkling? So it is actually an appearing condition. देखो stars की twinkling एक appearing condition है. जैसे ये star है, तो जो इस स्टार की जो लाइट हम लोगों के पास आती है, it has to cross through the different layers of our atmosphere. And through different layers of atmosphere, it used to bend several times. And after bending, when it reaches to us, we do used to see this portion as the twinkling. Okay, so this twinkling of light is just because of the continuous bending of the light, which is due to the different layers of the earth.
and that makes our brain to identify or to recognize that specific object as twinkling, but it is not actually twinkling. So it is just only the light which is coming. But an interesting thing is that if through the star the light which is coming, it is seems to be twinkle, then why not the sunlight seems to be twinkle, or the light which we receive from the moon after reflection of the light of the sun, why doesn't it twinkles? So it is because the moon and sun is comparatively nearer to us, so the amount or the intensity of light which is entering to the earth from the sun or the moon, it is more than to the intensity of the light which is coming from the star. Thus, we cannot able to distinguish the condition of twinkling of the light which is coming from the sun or from the moon. तो जब मून या सन से लाइट रे आती है तो वो हम लोगों को ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि देखो उसकी जो उस जगह पे जो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, और इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ऐसा नहीं कि वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, वहां पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, but that refracted light rays or that bending of light rays is not been observed by our eyes. हम लोग की आंखें इतनी सेंसिटिव नहीं है कि उस तरह के भी बेंडिंग को ऑब्जर्व कर ले। लेकिन हाँ, जो स्टार से लाइट रे आती है वो चूंकि उसकी इंटेंसिटी काफी कम होती है, इस वजह से उसकी बेंडिंग को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज स्टार्स के लिए, स्टार्स जहां पर एक्चुअली में है हम लोगों को वो उससे थोड़ा सा अबव पोजीशन में नजर आता है। So that is again because of the refraction of light. So these are the some basic phenomena which we do use to experience due to refraction of light. Now, if anyone is having any doubt, then you can say, otherwise I will come to an interesting topic over here, which is real and apparent depth. We have to go for the calculation in our higher class. In class 10th, we will do the calculation. But now just we will understand the phenomena of real and apparent death. So if anyone is having any problem till here, you can ask. Yes or no? No, sir. No. Okay. No, So let's continue. So what is real depth and apparent depth? तो रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ होता क्या चीज है? देखो फिर से ये एक रिफ्रैक्शन का फेनोमेना है, सिंपल रिफ्रैक्शन का फेनोमेना है जो कि हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये कैसे होता है या किस तरह का होता है? सो सच एज फॉर एग्जांपल यू हैड विजिटेड टू अ स्विमिंग पूल, कहीं पे तुम गए हो कोई स्विमिंग पूल में, एंड यू डू यूज टू ऑब्जर्व दैट द वाटर इज कंप्लीटली फिल्ड, वहां पे पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, और तुमने वहां पे बाहर से, जब बाहर से तुमने उस स्विमिंग पूल को देखा, सो व्हेन यू हैड सीन द फ्लोर, जब तुमने उसके फ्लोर को देखा, देन यू थॉट दैट ओ इट इज नॉट सो वेरी डीप, ये ज्यादा गहरा नहीं है, सो हम इसमें इजीली जा सकते हैं। बट व्हेन यू हैड एक्चुअली मूव्ड इन, यू फाउंड दैट इट इज मोर डीपर देन यू व्हाट यू हैड एक्सपेक्टेड इट। तुम जितना एक्सपेक्ट किए थे उससे ज्यादा गहरा है ये। So how this is possible? How this condition can be there? So that is the thing which we have to understand for the situation of apparent depth and the real depth. So what is real depth and what is apparent depth? So see, suppose for example, if this swimming pool was, say as for example, 5 feet depth. Okay, so the deep position is 5 feet over there. Now, when it is 5 feet and when it has been filled with water and you are observing from the top, you may observe it or you may found that it is not 5 feet. It may seem to be 3.5 or 4 feet deep only. So this is called to be the apparent depth. यहाँ पर ये apparent depth के लिए आ जाती है. So the condition of apparent depth and the actual depth is just because of the refraction of light. So ये हम लोगों को बस लाइट के रिफ्रैक्शन के लिए होता है। तो ये कैसे समझेंगे? जैसे कि हम मान के चलते हैं एम्प्टी पूल है, तो एम्प्टी पूल में जो फ्लोर होगा, इसका जो फ्लोर होगा, यू विल बी एबल टू रिसीव द लाइट डायरेक्टली बाय रिफ्लेक्शन। जो भी लाइट बाहर से आ रही है इट इज गोइंग टू कम बाय डायरेक्ट रिफ्लेक्शन। डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से ये लाइट यहां पर आ जाती है। लेकिन अगर हम यहीं पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल इट इज बीन फिल्ड विद वाटर, इसको पानी से अगर हम फिल कर देते हैं, नाउ ओवर हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन?
The light ray which is going to come, it will suffer refraction, so it will bend first. It is going to bend. It had to travel this way, but it had bended. Now again, when it is going to come from this source, it is going to bend. So this is going to be the normal, and it is going to be bent away from the normal. So it is going to bend like this. So ये यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा bend कर जाएगा. So it had to be its path. It had to be its path, but it had moved away. So because of this bending of the light, you will be appearing this floor somewhere here. It is going to appear somewhere here, and that is going to be the apparent depth. This was the actual depth, but this would be the apparent depth. यानी जितनी उसकी एक्चुअल गहराई है, वो हमको उतनी गहराई पे नजर नहीं आएगी, वो कम गहराई पे नजर आएगी. You can experience this thing also again by performing a simple experiment at your home. तुम अपने घर में एक simple experiment करो. क्या करना है तुमको? Take a bucket of water, fill it with water, completely fill it with water. पूरी तरह से इसको पानी से fill up कर दो. Now you take a small cup and put it straight over here. एक small cup लो और उसको नीचे में यहाँ पर place up कर दो. Now what you have to do, you have to wait for the time the water is getting stable over there. पानी जब तक वहां पे stable हो रही है, तब तक वहां पे उसको छोड़ो. Now after that, you just drop a coin. You just drop a coin in such a way from outside of the water that it has to reach to the cup over there. So from where you can see from the top, जहां पे भी तुमको ऊपर से दिख रही है वो कप, तुम इस तरह से कॉइन को गिराने की कोशिश करो कि ये कप में ही जाकर वो कॉइन गिरे. So why it is so, sorry, why you will not be able to do it? ये तुम ये सीधे सीधे कर नहीं पाओगे. ऐसा क्यों? Because the position of the cup is not where you are looking it. जहां तुम उसको देख रहे हो वहां पर वो कप है ही नहीं, इसीलिए तुम वहां पर इस कॉइन को गिरा नहीं सकते. So you just try first this one at home, and then I will tell you that how you can practice this one to make the coin to drop down in that cup. Okay, so there is a small trick. So by following that one, you can be able to do it. So this was again for the refraction of light. For the refraction of light, we do also use to observe a phenomena which is called to be as the total internal reflection. So that is also a phenomena because of the refraction of light. This one we will understand in class 10th, that how refraction of light can be reflection of light also. So depending on the medium, depending on the class of the medium or a kind of a medium we do use to observe, this kind of bending can be observed. This one can be used in the optical fiber for transmitting information. Now, let's move to the next topic or the next part of our chapter over here, where we have to understand about the spherical mirror. So today I will explain you about the spherical mirror. Its introduction only I will give. And in tomorrow's class, we will go for the image formation of the spherical mirror. Okay. So let's see, what are spherical mirrors? In our previous class, while we were doing for the reflection of light, we had understood about the mirrors, and there we had seen the mirrors are in two different forms. जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, तब हम लोग दो तरह के मिरर के बारे में पढ़े थे. एक पढ़े थे हम लोग प्लेन मिरर के बारे में, और एक इंट्रोडक्शन था स्फेरिकल मिरर के बारे में. तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे फिर से डिस्कस कर रहे हैं. सो अगर हम लोग एक प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं, सो प्लेन मिरर इज एक्चुअली अ रेक्टेंगुलर ग्लास शीट. एक रेक्टेंगुलर ग्लास शीट होता है, पीछे में मरकरी या सिल्वर से कोटेड होता है, सो दैट इट इज अ मिरर. सो ओवर हियर इट इज हैविंग अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. यहाँ पे क्या है? प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने के वजह से यहाँ पर हम लोगों को ऑब्जर्व होता है कि इट इज कॉल्ड टू बी एज अ प्लेन मिरर. यहाँ पर एक प्लेन फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसीलिए इसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं. But when we do used to go for a spherical mirror, then we do observe that there are spherical curvatures through which the mirror has been constructed.
तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक स्फेयर लेते हैं, जैसे ये एक कंप्लीट स्फेयर ले रहे हैं, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फेयर, ओके, ट्रांसपेरेंट हॉलो ग्लास स्फेयर, मोर स्पेसिफिकली इफ आई विल से, अगर ज्यादातर बोले तो ये ट्रांसपेरेंट है, हॉलो है, और ये एक कंप्लीट प्लेन ग्लास ग्लास बॉडी है। Now, if we will cut it into two halves, अगर इसको हम लोग दो पोर्शन में इस तरह से कट कर लेते हैं, एंड फॉर वन इफ वी विल कोट इट फ्रॉम आउटसाइड, अगर इस तरह के कर्व में अगर हम बाहर से कोट कर दें, सो व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट द इनर पोर्शन विल एक्ट एज अ मिरर, ये इनर पोर्शन जो है वो मिरर जैसा एक्ट करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड टू बी एज अ कॉनकेव मिरर, इट इज कॉल्ड टू बी एज अ कॉनकेव मिरर। सो अगर मेरे पास एक कर्व कंडीशन आ गया है, बाहर से हम कोट कर देंगे इसको फ्रॉम आउटसाइड, then the inner portion is the mirror, and this is called to be as a concave mirror. Now if I reverse the situation, अगर हम उसको अंदर से कोट कर देते हैं, ठीक है, अगर हम अंदर से कोट कर देते हैं, then जो बाहर वाला पोर्शन है it will act as a mirror, so that would be called to be as a convex mirror, इसको हम लोग क्या कहेंगे, convex mirror कहेंगे। So whenever we do used to observe spherical mirrors, then we do obtain it into two forms, हम लोग इसको दो तरह से देख सकते हैं, एक कॉनकेव मिरर के रूप में देख सकते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर के रूप में देख सकते हैं, और दोनों ही मिरर्स जो हैं, दोनों ही मिरर्स स्फेरिकल मिरर्स कहलाते हैं, बिकॉज दे हैव अ स्फेरिकल कर्वेचर, उनके पास एक स्फेरिकल कर्वेचर होती है, इसीलिए। खैर, आगे देखते हैं, जब हम लोगों को स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ना होता है, तो हमको कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में जानना होता है, तो यहाँ पर इन टर्म्स को डिटेल में दिया हुआ है, इन सभी टर्म्स को तुम लोगों को याद करना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। So let's see with the center first. So that is the center of curvature. The center of curvature किसको कहते हैं? The center of the sphere through which the mirror has been taken out. जिस स्फेयर के से हम लोग उस मिरर को कट आउट किए हैं, उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, बिकॉज जस्ट नाउ आई सेड दैट वी विल टेक अ स्फेरिकल बॉल, हम लोग एक स्फेरिकल बॉल लेना है और उसके एक पोर्शन को कट करना है, तो यहाँ पे एक सेंटर तो होगा। So the center of that particular sphere through which the mirror used to be cut out or taken out, that would be called to be as the center of curvature. Nextly, we have to move to the next one. Just a minute. So the next one which we will go for, that is the pole. Okay. So the pole is the point on the mirror where we have to go for the construction of the principal axis. Okay. So a principal axis is a line when we go for a straight line through the center of curvature to the mirror, that is called to be as the principal axis. So the point on which the principal axis touches the mirror over there, that is called to be the pole. It is called to be the pole over there. So for concave and for convex, we do have two poles. So here is one pole and here is one pole. So individually they have not two poles for a particular mirror, but there are two different poles for two different mirrors. So you can see over here, this is for concave and this is for convex. So these are the pole where the principal axis is crossing through. So principal axis is the straight line which is passing through the center of curvature and the pole of the mirror. Now, with this one, you have to go for the radii of the mirror. Okay, so radii of the mirror. So what is radii? Radii is the radius of curvature. So radius of curvature is the distance between the optical center or the center of curvature and the pole of the mirror. So this is the distance. तो देखो यहाँ पे center of curvature से लेकर pole तक का जो distance होता है, उसका नाम क्या होता है? Radius of the mirror. ठीक है? तो radius of curvature भी हम लोग उसको कह सकते हैं. So over here, this one CP is the radius of curvature. Here also the CP is the radius of curvature. The next one which you need to remember, that is the focus. Okay, so a point on the principal axis just between the radius of curvature. ये जो radius of curvature है उसका ठीक एकदम mid point पर एक point आती है, उसको हम लोग कहते हैं focus. It is called to be the focus over here. So यहाँ पर भी ये क्या है? ये focus है. So what is focus? So we will understand focus when we will go for the image formation. जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो एक चीज हम लोग प्रिंसिपल पढ़ेंगे,
इमेज फॉर्मेशन के लिए प्रिंसिपल याद करना काफी जरूरी है। उसी में से एक प्रिंसिपल है कि व्हेन द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द फोकस। तो जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रूल व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। देयर आर few rules, there are 3 4 rules which we will understand for the concave and convex for the image formation, so that you will have to remember. And the distance between the focus and the pole, the distance between the focus and the pole is called to be as focal length. फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी नीड टू रिमेंबर ओवर हियर. So these are the things which you have to learn. So I will request you all that you please, when I will provide you the video, you can pause it over here and note down all the points, or you can take the screenshot. With this one, you please learn all these points, okay? Because these points will help you to understand the image formation as well as the basic rules of the image formation. So today I'm keeping the class till here only. Tomorrow we will understand about the concave and convex mirror more, where we will discuss that how concave mirror is called to be as a converging mirror and how convex mirror is called to be as a diverging mirror, or more specifically I will say why concave mirrors are called to be as converging mirror and why the convex mirrors are called to be as diverging mirror. So we will understand this one, and with that one there are rules for the image formation, and the image formation are also present. So today's class I will keep it till here only, and in tomorrow's class we will continue from this particular topic. So before that I will request that please all of you revise till this particular point of this particular topic. So thank you for today. Good night everyone. Thank you, sir.